On behalf of Sustaina Greens, I'm delighted to welcome all of you to this webinar on Big Butterfly Month. It's my pleasure to see you here as nature lovers who want to explore the fascinating world of butterflies. This webinar is an opportunity for all of us to celebrate the remarkable creatures like butterflies and raise awareness about their conservation. First of all, I would like to thank our co-organizers, Dr. Anjali Thakur from Parul University and Mr. Mishal Pardiwala for supporting us and making this event possible on a wider scale. Also, I would like to express our gratitude to our esteemed speakers and young experts who have graciously agreed to share their knowledge and passion with us. Your insights will undoubtedly enrich our understanding of butterflies and inspire us to take action to protect them. Before beginning this session, I encourage all of you to actively participate, write down the questions in the chat box, and engage in discussions during the webinar. We will try our best to answer all the questions. However, we can limit the questions in case of repetitions and time constraints. Let me introduce you briefly to our speakers before taking this session forward. Our first speaker is Mr. Rajat Joshi, who is a wildlife consultant and a passionate butterfly observer. He is a coordinator of Big Butterfly Month for Pune district, and he has pursued masters in environmental sciences and studied butterfly for 5 years. He has composed many research papers for his study on the butterfly diversity of Pune Hills and also composed a book on butterflies of Ferguson College in Pune. He has built some butterfly gardens in the Maharashtra, and he is a profound member of I Found Butterflies website and Indian Butterfly Monitoring Scheme in Pune. Now I will introduce our second speaker, Mr. Abhishek Paliwal. He is presently working as a project manager in the Rewilders. He is a naturalist who pursued his passion towards wildlife conservation straight after completing his bachelor's in engineering. He has worked with Bombay Natural History Society to develop natural habitats for butterflies in central India and has played a crucial role in conducting various Lepidoptera and avifauna monitoring surveys. He has more than 3 years of experience in conducting butterfly walks, nature trails, nature awareness campaigns, and taken many workshops for the corporates, schools, societies, forest departments on the butterfly conservation. After our speaker session, there is going to be a very interesting video presentation by our team member, Ms. Shruti Suresh. She is currently working with us in Sustaina Greens as a social media manager. She is a wildlife enthusiast and did her master's dissertation on the impact of canopy cover on butterflies in Tirumalapur Reserve Forest of Telangana. Looking forward to it. After that, we will have a short talk with Mr. Mishal Pardiwala, who is the founder of Treeware, our gifting partner, and he will share the vital role of butterflies and bees in our ecosystems as pollinators and how we can shift our lifestyle choices for a eco-friendly living. Lastly, a vote of thanks will be delivered by Dr. Anjali Thakur ma'am from Parul University. So without delaying it further, I welcome all of you to Big Butterfly Month webinar. We hope that this event will inspire you to appreciate and protect these winged wonders that bring color and vibrancy to our world. Thank you for joining us, and let's spread our wings to curiosity as we embark on this exciting adventure. So I'm going to share the screen for our first presenter,
Just give me a minute. Right. Raja, So am I audible, Meenakshi ma'am, and everyone? yes, yes, you can proceed, sir. Thank you so much. So yes, as Meenakshi ma'am rightly mentioned, we were today we are going to celebrate the Big Butterfly Month, which is like the biggest bio blitz, I would say, that occurs in India. It is an event which is likely to target the audience, target local people, schools, corporate offices, and other intended audience to attract them and to spread awareness about butterfly conservation. Not just butterfly conservation, but encourage them to watch butterflies, which will which will lead to citizen science initiatives, which would definitely aid in the increase of importance in watching and understanding butterflies and how important they are in the ecosystem. So, can you next slide, please? So yeah, before we actually go into the deep insights of the Butterfly Month and how actually students can engage in all such activities, just before I will speak on the basics. So what are butterflies and just the intro of it. So as some of the school and college students may be aware, especially the ones who are studying zoology and specialize in insect studies, they must be aware that butterflies are like absolutely colorful and enchanting insects which belong to the scientific order Lepidoptera. So Lepidoptera, basically the scientific orders which you understand or which you read, are basically made up of two languages. It is Greek and Latin. For scientific nomenclature worldwide, these two languages have been used. So the language is Lepidoptera, is such a word which is composed of two parts. The first one, lepido, meaning scales, and terra, meaning wings. So basically, I guess many of us have handled butterflies when we were small. We had some fascination to catch butterflies because, like, these are very colorful insects, and whatever colorful when we used to see in our childhood, we had the desire to like pick them up or to hold them. So while handling any such butterflies, if you have carefully noticed, if we touch a butterfly, then I guess a powdery substance sticks to our hand. So the powdery substance is nothing but the scales of these butterflies. So as the name suggests, Lepidoptera meaning scaly winged insects, that's butterflies. And butterflies are not the only part of this particular family. The second part of this particular family, even more diverse than butterflies, are moths. And moths, of course, are also like less studied parts in our ecosystems. So basically, moths and butterflies, these both constitute the order Lepidoptera. So these are insects. Basically, they include in the phylum Arthropoda. Why Arthropoda? Because they have jointed appendages. Poda means appendages. Arthro means joint. So these have like jointed appendages. Next slide. So as earlier I spoke on moths as well being the part of the Lepidoptera clan or the clan of scaly winged insects. So the question would arise like, what is the difference between butterflies and moths? It's like the basic question which always persists in the minds of people. Like we see butterflies, we see moths. If we look at closely, they appear a bit same, but like why they are then considered differently? There should be a common point of difference, right? So the point of difference, if you see and if you observe them in the wild and anywhere near your households, then you would understand by these prominent differences. So butterflies are basically creatures which fly in the day. These are sun lovers, means they fly in bright, brilliantly sunlit skies. Well, moths are tend to be night explorers. Moths have a night activity. We can call it as nocturnal activity, while butterflies have diurnal activity.
Second one is butterflies. In the photo, as you can see, butterflies rest with their closed wings. The upper photo, you can see it is a red Piro butterfly. Red Piro butterfly is like one of the most common butterflies found in the scapes, city and urban scapes. So if you see it's resting on a leaf and its wings are closed. So while resting, butterflies tend to close their wings. Majority of the species will do this. There are again some exceptions, but if you consider on a majority level, butterflies do rest with their closed wings. On the other hand, in the photo which is down, you can see that there is a moth, and the moth is resting on a wall with its open wings. So this is one of the striking parameters which you can see in the field or anywhere else where you are observing butterflies and moths. The third one is the caterpillar stages. So both of these creatures have 4 to 5 distinct stages, life stages. Starting from the egg, then it will be a caterpillar. Caterpillar will eventually form a pupa, and from the pupa, the adult moth or butterfly will emerge. Another thing, the caterpillars of butterflies are not hairy. No hairy constituents are present on the body of butterfly caterpillars, but moths, on the other hand, various species of moth caterpillars have hairs on their body. These hairs, if you touch it, it can be itchy and it can cause several swellings on like your fingers. If you touch them, it can cause some swellings as well. The fourth one is that like the pupa or the cocoon, if you see, which is an important life stage in the part of both of these. So the cocoon term is given to the pupa of moths, and the pupa of a butterfly is known as chrysalis. So that is another terminological difference between these two creatures. But these two creatures are the main what I can say, the main clan which exist in the family of Lepidopterans. So these are some of the slight differences. I'm sure after this session, like you all guys will definitely go on field and start watching butterflies and moths. The more we observe, the more we will get the differences and more we will be aware about these creatures. Next slide. So yeah, the thing which always has captivated the minds of people from generations, enchanted people and wowed them absolutely is that the life cycle. Life cycles of butterflies is no less than a magic, and it is a beautiful transition of a butterfly from its earlier stages, I would say, the former stages, to the absolute pinnacle of its stage, the absolute climax, as we say, the adult butterfly. So in this particular slide, I have taken a small example of a plain tiger butterfly. Plain tiger is one of the most common butterflies which can be found in the urban scapes, especially we have it in good numbers in Pune, Mumbai, and the region of Western Ghats, we have it in a very good number. So it's also very common in the central scape as well, central Indian scape, and it is one of the most common butterflies. It generally flies in the lowland areas near agricultural scapes as well, visits urban gardens, and this was one of the scenes where I was able to do its life cycle. So the first photo which you are actually seeing is the egg laying. Any life cycle starts with the egg laying of the female butterfly. Female butterfly, here you can see the plain tiger female is laying egg. Uh, when you can say it's laying an egg, its abdomen will be curled up towards the leaf, and not just any leaf, it would be one of the most tender leaves its host plant produces. So here the tender leaves of Asclepias carasavica, or easily you can know it as scarlet milkweed plant. Commonly it is grown in water resources and also used in plantation purposes. So the egg laying female is here in the first picture. Secondly, if you can see, that is the egg. It is bit cylindrical but bulgy from both sides. The egg
generally will be different for different species. It is based on families as well, like what would be the egg composition of the members belonging to a particular family. So the second one is the egg. Third one you can see is the caterpillar. Caterpillars, again, there is an interesting term known as instars when we talk about caterpillars. So basically, what is an instar? So the growth of caterpillar in subsequent stages after it eats leaves is known as instar, and it is a remarkable growth which you can track. It is increase in the size of a caterpillar subsequently after devouring the leaves of its host plant. So here the caterpillar, if you can see, it's consuming the fresh leaves, I would say the tender leaves and all near the floral buds, which are the fresh leaves. So the caterpillar is kind of small here. But as the caterpillar subsequently increases in size, it would be seen that a change in instar is made as the caterpillar changes in size. It would start feeding on more rough, or I would say more grown up leaves or the old leaves of the plant. As its mouth parts again start developing well, you can directly correlate it with the mouth of a baby or the teeth of a newborn baby. So the baby first would not start eating like what it eats today. He will first have some good fluids. He will have some cerelac and all these things. And as it grows, as the baby grows, he will start eating normally up to the stage that now we as adults are eating. So the same growth is observed in the caterpillars of the butterfly as well. And so this is the caterpillar. The fourth stage is the pupal stage. So caterpillar, after devouring the leaves, have been eating for a long, long period of time, like absolutely like 15 to 20 days, it eats and remains in the caterpillar stage. It turns into a pupa. Finally, it sheds its skin and makes itself transform into a pupa. After the pupa, what happens is the most magical transition, I would say, on this earth, because there is nothing else which can compare the development of a butterfly inside the pupa and its emergence. So this was the pupal stage. Can we go to the next slide? And so the magical transition. So the pupa, which was there in the earlier slide, day one, it was the day when the pupa was just formed. Day seven, the pupa you can see right down day one. So the pupa is bluish in color. If you can see, guys, the color has changed subsequently, So, and this is the pupa so, of day so wait a seven. minute. I request everyone, please mute yourself. Yes. So you can start now. Yeah. So sure. So the second picture you saw of day seven, you can see a subsequent change in the color, right? So the green pupa has turned into a bit bluish color. The third one is absolutely magical. The butterfly is ready inside the pupa, and you can see the pupa is totally transparent. We can actually see what is inside the pupa, what butterfly is there in the pupa. So there is the day 12 pupa, I would say. So the first day is day one, this final day of emergence is day 12. So totally we will get 12 to 13 days of total pupil stage. And after that, a fresh e-closed butterfly having fresh colors will emerge from it, and this what I call it as a magical transition. The adult you can see it's of the plain tiger. In the last slide, if you saw the plain tiger female laying egg, it is nearly the same species, and the male has emerged out of it. So this is like the one of the transitions which is absolutely magical, and people have been captivated by such small transitions of in butterfly life cycles from since ages, of course. And this has created a big what you can say, a big interest in the minds of young butterfly watchers, and a great fascination in the minds of people as well. So next slide. So yeah, uh, as I said in the previous slide, that
the eggs of butterflies, right? It will be different with respect to the families of butterflies. So basically, there are butterfly families. Now we would see such a small creature, like how it is possible, like it's there and distributed in families. But yeah, butterflies have been distributed in several families. uh, the butterfly families, basically, if you see, there are six butterfly families, and the butterflies have been bifurcated into these six families depending upon their behaviors, depending upon their body composition, and the basically the later part of their stages, their life cycles, and their behaviors, most probably, and morphological differences. So by morphological differences, what I mean, how they appear, the external appearance is what helps the scientists to differentiate. Also, DNA studies are there. Also, like basically mapping the DNAs of various species, and the similar studies are there which could conclude that a butterfly belongs to one single family, not. So I would start with the first one. Sorry. So the first one is Hesperidae. All these are scientific names which I would mention first going forward, because like scientific names are the basis of bifurcation, correct? So the common name of Hesperidae is the skippers. Skipper butterflies is one of the, I guess, the recent additions in the family of butterflies. Of course, the addition is like, if I say recent, it's not no longer older than 100 years. So 100 to 200 years, I would say. So Hesperidae being the skippers. Skippers basically have both of the characteristics of moths and butterflies. So while distinguishing basically and putting them in the butterflies, the thing was seen basically that they are fast flyers, they rest with their closed wings, and whatever characteristics, morphological as well as genetic characteristics they had, it was close with the butterfly family, so they have been added in the clan. These are basically fast flyers, small stout bodies they have, as we see in moths, some of the moths. So that is one of the characteristics which they also also relate to the moths. So Hesperidae, that is skippers, there are fast flyers. They basically lay eggs on several grass species. Their eggs would generally be dome shaped or pie shaped, I would say. So yeah, there are several species of skippers which are found in India. There are few colorful species as well, and few species which are strictly found in the urban habitats, while few species would be the species uh, which will be found in the tropical evergreen forests in India. Typically in the South India, I would say few species will be endemic, and there is again a massive, massive diversity of such species in the northeast region of India, which is considered as, I would say, a biodiversity hotspot and a heaven for butterflies. Secondly is the Papilionidae, or we can call it as a swallowtails. Particularly if you see the pointer or the cursor, it would lead you to the tail-like projection which is there in the butterfly. So basically, this tail gives the name of swallowtails. Swallowtail butterflies have several members, like nearly 20 species, 20 odd species in India occur in the swallowtail clan. The butterfly which you are seeing in this particular slide is the common mormon. Common mormon, as uh, rightly mentioned in the name, it's very common, and it is one of the most common butterflies which you will find in the city premises. The female generally will lay eggs on curry plant and the lemon plant. So it is one of the most commonly used household plants, I would say. So you can find some of its caterpillars on these plants. These are green in color. And the caterpillar of this butterfly resembles to that of a caterpie Pokemon. So if like if there are any Pokemon viewers in this particular chat, so you will relate to it, that how a caterpie Pokemon looks, and similar. It's been inspired by the look of the common Mormon butterfly. So like quickly after this session, just Google it. What is caterpie Pokemon and what is
the common worm on caterpillar, you will find considerable similarities between the two. So these are swallowtails. The third one is Piridae, or the yellows, I would say, yellows and whites. So basically, yellows and whites are the colorations of these butterflies. These butterflies are seasonal, can be found in for short distance and long distance migrations. This is grasshopper butterfly, which you are seeing nectaring on one of the snakeweed flowers. So basically, these butterflies will be seen together laying eggs on host plants in great numbers. These species have been found to gather in groups and migrate to certain distant places when there is unfavorable conditions in their respective regions. So these are the yellows, and their egg composition is generally a cylindrical eggs, which are in color. The fourth one is nymphalids, or the brush-footed butterflies. Nymphalids, I would say, are the most diverse clan, or the most diverse family of butterflies in India, not in India, just in the world. So brush-footed butterflies, basically, every butterfly species, or every butterfly will have 6 legs, which are 3 pairs of legs. Only exception being the nymphalid butterflies. Nymphalid butterflies, if you see in the picture, they have 2 pairs of legs, that is 4 legs, and a very, very small pair of legs which nearly are constricted and aren't visible to us unless and until we observe it very closely. Their most forward legs are very much restricted because they are not in particular use. So the butterflies which will have 2 pairs of legs will use for landing, will use for tasting of the host plants, and carrying out their different activities like walking and all these things. So brush-footed butterflies, it consists of various species. Out of the 1500 species in India, nearly like 400 species would be nymphalids, or the brush-footed butterflies. So various species like blue tigers, plain tigers, the earlier one which we saw. Again, this one, it's the common evening brown. These species are included in nymphalid family, which is known as brush-footed butterflies. Some of the members of these family will have a brush-like tentacles on their legs. That's why they get their name as brush-footed butterflies. The fifth one, I would say Riodinidae, the smallest family for sure, which exists in the butterflies. Nearly roughly 10 species they will have out of the total 1500 species which are found in India. So Judies or metal marks, I would say Judy or plum Judies are the color of butterflies, plum color and nearby colors. And there are like metal markings and silvery markings on their wings. If you see, there are 2 to 3 bands which are like silvery in these butterflies. So the one butterfly which you are seeing is currently having 2 bands. It is known as the double banded Judy. So these are the butterflies which are found basically flying in the forested regions mainly. They would prefer shady regions as well. And so these are these Judies, and a characteristic greenish yellow eye that is there. It is the characteristic of this family, because rest all butterflies, if you see, the eyes would be rather yellow or mostly black or brown. But the color of the iris in these butterflies is striking blue, or striking yellow, or green. So these are the Judies, and the sixth and the final one, it is Lycinidae, or the blues. So why they are called as the blues? It's straightforward. The butterfly has closed his wings here, has opened its wings rather, and you can see bright blue colorations on their open wings. So the butterflies in these particular families will have bright blue color in their open wings with some whitish and black color. Most of the species, the blues, have a particular fascination to the grassland habitats. Many of the species, like even 20 to 30 different species you will see in the grasslands, while some species would totally be restricted to forest habitats. So this is the diversity of the blue butterflies, and
various species. Again, after nymphalids, I would say the blues or the lysinids are the species which are the butterflies which have the highest number of species. So these are roughly the six butterfly families in which butterflies have been bifurcated, not just in India, but globally. So these are the six families of butterflies, starting with Hesperid, the skippers, Papilionidae, the swallowtails, Piridae are the yellows and whites, Nymphalid, the brush-footed butterflies, Rhodinidae being Judies, and Lysinid, the final family, being the blues. So next slide, please. So one of the most important parts, like the questions which I've been asked earlier, is like why we study butterflies and what's their ecological role and significance in the surroundings. So basically, I have like come up with two of the most important characteristics of butterflies, which makes it an ecologically extremely important creature. But the first one I would talk about is butterflies are beautiful, and that's one of the perfect reasons why you should study them. Secondly, pollination. Pollination is one of the most important ecological service, I would say, that the butterflies give. And of course, butterflies are one of the prime pollinators, the most prime pollinators being bees, honeybees, and wasps. But several butterfly species contribute in pollinating various flowering plants. Um and it indirectly ensures the sustenance of those plants in the ecosystem. And absolutely, it also ensures the sustenance on several butterfly species on those plants as well. So there is a typical interaction between a plant and a butterfly. So some butterflies and plants are also known to co-evolve during the course of evolution. So that is again one more thing. So pollination is one. Secondly, butterflies are an important part of the food web. The reason being butterflies have been hunted by several insects, not just insects, I would say, spiders, birds, frogs, and other members of the food chain as well. So if you see, it is a food to nearly 80% of the insects and majority of the insectivorous birds. Insectivorous birds, just get an example of paradise flycatcher or green bee eater. They love devouring and enjoying butterflies, several butterflies. So there is one, even frogs eat butterflies. Several of the spider species. The one in the photo, which you can see, it is a yellow crab spider, and the butterfly which it has hold is a palm dart butterfly. So basically, as butterflies will sit on various nectaring resources, these clever predators would hide in those flowering resources, and as the butterfly lands, it would be the best chance for them to attack and capture these butterflies and devour on them. So that's how the life process is. That's how the nature is, and no matter how beautiful the butterfly, the creature is, but it is being devoured. It is being fed on by various creatures for, of course, their own sustenance. So the food chain, of course, you would say it's ruthless, it's not kind, but of course, that's the way it is. Even the most beautiful creature will have to fall prey to other creatures. So these two being one of the important sources, important reasons why butterflies are so important in the ecosystem. The third reason I would say butterflies are extremely sensitive to even the smallest changes in the surroundings. So butterflies can also be used as a source or also be used as a model to study climate change and the changes in the important weather patterns over the year of time, so that we can get a really good idea on what effect the climate change has on these creatures. Next slide. So coming to the main thing, which is the big butterfly month. In the earlier slides, we spoke a lot about butterflies, their introduction, what all species they have, what are the families of butterflies,
and related things. But now the thing which attracts, I would say, and it is the common point of ground of all the butterfly watchers and butterfly lovers in India, is the Big Butterfly Month. Today, remarkably, is the last day of the Big Butterfly Month. It is 30th September. It is a 1 month long BioBlitz, which is celebrated in India. It starts in the 1st September, ends 30th September, that is today. And this is one of the biggest BioBlitz, I would say. It is a biodiversity festival in which people from all walks of their life come together and celebrate butterfly watching. Not just butterfly watching, but observing butterflies, clicking photos of butterflies, exchanging knowledge about them, and of course, uploading their observations in citizen science websites. So, of course, Big Butterfly Month being the biggest BioBlitz in India. In India, it has been being celebrated from the last 4 years. This is the fourth year. Several wildlife NGOs, companies, forest departments gather together for promoting butterfly watching. So there are some interesting events like the one which we are having currently. It includes webinars, butterfly webinars, butterfly walks, workshops on butterflies, and several drawing competitions as well, which can be organized on a school level or a college level to promote interests among the school going children about butterflies. Of course, butterflies are beautiful, colorful creatures, but as long as we don't create that particular interest in the minds of young people, young children, who are, of course, the future of the country. So, as long as we don't do it, it would not make justice. So, the next thing being about drawing competition, then again, there are like butterfly walks, butterfly races, and all these things, uh, which comes in the Big Butterfly Month. So as we go on butterfly trails, as we click several butterfly photos and observations, it's not just enough to click butterflies. What lies ahead is to submit these butterfly observations on citizen science websites. Now, what do I mean by citizen science website? This websites which are run by citizens, the websites which are run by the observations made by citizens. It would be of any type, any biodiversity form can be included in it. But as we are explicitly talking about butterflies, there are some projects on the websites known as iNaturalist, I Found Butterflies, and Indian Biodiversity Portal. So iNaturalist, again, being one of the most important and most easy website, I would say, which is being in use for butterflies in the Big Butterfly Month. We also have a project of the Big Butterfly Month 2023 India on iNaturalist, where we have got like more than 450 species being observed by several people in this particular butterfly month, and the number is just increasing day by day. So, like last year, it was like 400 species. This year, it has been 450 species, and it is also expected today till we end the project that more species will also be added in the same. Secondly, I would talk about I Found Butterflies website. I Found Butterflies website is one of the most widely used websites for submitting excellent butterfly photos, which are really great, having all the identification keys which are really useful for butterfly watchers when you identify or spot a butterfly on the field. So it is one of the most important and widely used website along with iNaturalist, which really guarantees the species level identification of butterflies. And Indian Biodiversity Portal, third one, they always have some interesting prizes for their contributors. So like there would be some butterfly goodies, butterfly mugs, or anything related to butterflies for the people who at least submit 50 observations or 100 observations in this particular month. So these three sites are the prime sites you will target while you are submitting your observations. Of course, these are citizen science websites, and what I mean by citizen science website, in which is that you always don't have to be a scientist or a professor to contribute to science. Even citizens with their utmost important observations on field can contribute to science, and these three being the perfect platform for it. So this is like the gist of a Big Butterfly Month.
From this year, the Big Butterfly Month has started announcing district coordinators. The district coordinators will be the persons who would be in charge of conducting several activities like the one mentioned here in their district. And uh, like this year, I had got the opportunity to do it for the Pune region. So, the next slide, please, ma'am. So yeah, this year I was a district coordinator for the Pune district. One of my important roles and responsibilities were like planning several butterfly friendly activities like butterfly walks, butterfly observations, engage along with several institutions which are working in Pune for the cause of wildlife conservation and which are interested to do and carry out such butterfly friendly activities. So there are several photos which you can see here. We had over four butterfly watching events in various wildlife habitats of Pune, one being the Vetar Tekadi or the ARI Hill. If you live in Maharashtra or if you live nearby Pune, you would see that of course there are this is ARI Hill, Betar Tekadi, and Pune is a city which is composed of several hills which boasts a particular type of biodiversity, and it is a rich biodiversity zones. These are one of the last green pockets which are there in the Pune city and the Pune district. So people love to go there, explore these habitats, and watch several species, including birds and butterflies. So, Meenakshi ma'am, is my sound, am I audible? I guess, Yes, sir. I Yes, sir. guess, I guess Sir, someone I had request you to ended. please, yeah, to please Yeah, complete it as early as possible. yeah, yeah. Can we go in the previous slide? Yeah, so we had like 4 to 5 different events as a district coordinator, which gathered more than 100 people. We have watched tons of butterfly species and exchanged knowledge about these species. And the citizens have already started uploading their observations on the citizen science websites, and thus have contributed well to the total observations, which are there in the Big Butterfly Month project. So next slide. So the Big Butterfly Month will end today, and what is going to start and possibly never end is the Indian Butterfly Monitoring Scheme. It is known as IBMS. It has been started by Dr. Krishna Mekunte sir in India. One of the cities which already was doing it since the last 10 to 12 years is Bangalore. And if any Bangaloreite here, you can definitely get in touch with the Bangalore Butterfly Club, which organizes activities every fortnight. And every fortnight, they would watch butterflies and count those butterflies in particular specific sites over long term. So why we should count butterflies is that for the long term monitoring, of course, for the next 10 to 15 years, if we count butterflies on a particular path, on a particular road, on a specific site, then we would get really a good data for butterflies, and we would literally see what are the patterns of butterflies in these particular sites throughout the years. Is there any change in the butterfly patterns? And if there is, what is the change? So these things are really important while monitoring and while counting butterflies. Of course, there is one app of eBird for birds. There is an app of Biodiversity Atlas, Butterflies of India, for butterfly watchers, and it has been currently launched on the Google Play Store as well. So 30-minute butterfly counts is possibly the newest but the most convenient method for counting butterflies in half an hour on a particular trail in a particular site. What thing follows is you have to do it continuously so that you get a good data. So it was inspired by the UK butterfly monitoring scheme, and the frequency it would use is twice in a month. So in Pune,
work has already started in Beta Tekdi is one of the monitoring sites, and there is a group, dedicated group, which always goes in a fortnight and counts butterflies over the next 2 to 3 hours on different trails. And area selection. Now, what area we could select while counting butterflies? The area which is preferred is an undisturbed or a protected area where all these observations and all these monitoring work can go, because it is like much more convenient than the wild areas where we generally don't have any control or private lands. Okay, the next slide, please. So IBM is in Pune, of course, with Tekdi, as I said, it was the first monitoring which was started. Dr. Krishna Mekunte himself was here and he addressed the group. He explained the importance of Indian Butterfly Monitoring Scheme. Also, I knew that some of the students, some college, university students are also there in a part of this chat. So, of course, guys, if you have to contribute to these things, you have to start monitoring butterflies and select the area which you are monitoring. In Mumbai also, I guess it has started in the BNHS Nature Reserve and Sanjay Gandhi National Park. So you can join those groups and you can monitor butterflies in those areas. Of course, the main reason to understand is the population dynamics of butterflies, the patterns of butterflies and how they are getting affected. And of course, as I mentioned earlier, we can select butterfly as a model for study of climate change. So that thing is important. For this, you have to do long-term monitoring of butterflies. Next slide. So yeah, talking about some of my experiences, as ma'am mentioned rightly in the beginning, like I Please have, allow students to join. of course, these butterfly things and all these things have been going on. I've been into butterflies for the past 5 years due to a college assignment, which ultimately led to the betterment of my butterfly observations. I have a paper of butterfly diversity of Vita Tekadi, which I composed last year. The first mobile app I mentioned on butterflies, BioAtlas India. I was in one of the teams which did that. It was in the lab of Dr. Krishna Mekunte. I'm also working on I Found Butterflies website, which is a great website again for submitting your observations and getting good field records for identification of butterflies. So basically, as a student, what you can do, you can take part in butterfly surveys. Of course, no knowledge will be required. Of course, we all start at somewhere in our life where we will not have any knowledge about that particular field. But more participation, if you take in these butterfly census, walks, ecotourism, and all these things, you will be exposed to the world of butterflies, which will definitely lead you doing wonders in this particular field. Of course, research and everything is there. You can opt for a PhD on butterflies as well after your masters. So all these things. And of course, the next thing is that yeah, sorry, I guess I got disconnected. So ultimately, it has resulted in the composing of the Butterflies of Ferguson College book, which I had composed last year. So yeah, of course, I have been on a good journey and I'm just started to learn. Of course, you guys have a lot to discover and a lot to learn in this particular process. So not like wasting another time, I would stop at this moment and would request Abhishek to take up the next part of the presentation. Thank you. Thank you so much, sir. Meenakshi, can I share my slide? Yes, sir. You can share now. Yeah, sure. Just let me know if my presentation is visible. Yes, it is. ओके तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम अभिषेक पालीवाल है और जैसा मीनाक्षी मैम ने बताया मेरे बारे में थोड़ा सा, एंड आई एम जस्ट अ बिगनर इफ़ यू वुड से। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ बटरफ्लाइज के बारे में, फील्ड पे रह के और लोगों के साथ रह के कि बटरफ्लाइज होती क्या है, कैसे वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
कैसे हम लोग डिपेंडेंट है बटरफ्लाइज पे, हमारा जो फूड है, फ्रूट्स है, वो कैसे रिलेट करते हैं हम बटरफ्लाई से, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बटरफ्लाइज हमें करके देती है जिसके बिना हमको हमारे जो फ्रूट्स और ग्रेन्स है वो मिल ही नहीं पाएंगे। तो वही कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है वो मैंने इस पीपीटी में प्रेजेंट की है, और आई होप डेफिनेटली आप सब लोग इस चीज़ को क्यूरियसली देखेंगे और समझेंगे कि क्यों बटरफ्लाइज हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग चैट बॉक्स जो है, अगर आपको पता है चैट का एक ऑप्शन होगा, उसमें अगर आप लिख दें बटरफ्लाई, सो आई कुड अंडरस्टैंड कि हाँ सब लोग एक्टिव है। just see if the people are writing or not, so that सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। एंड क्योंकि मैंने आगे एक छोटा सा क्विज भी रखा है, तो होपफुली सबको फिर चैट बॉक्स में लिखना आसानी हो। जस्ट राइट बटरफ्लाई फॉर मी। कूल, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एक बटरफ्लाई के बारे में, कि एक बटरफ्लाई दिखती कैसी है। तो बटरफ्लाइज के 4 विंग्स होते हैं। जो अपर विंग है, अगर आप देख सकते हैं, जो ये ग्रीन वाला लाइन से शो करा हुआ है, दिस इज नोन एज 4 विंग, यानी जो ऊपर के जो विंग्स होते हैं उसको 4 विंग कहा जाता है। जो नीचे के विंग्स होते हैं उनको हिंड विंग कहा जाता है। हेड, एज यूजुअल वी से इट हेड, एंड देयर आर 2 एंटीनास व्हिच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम मॉथ्स, क्योंकि इनमें जो एंटीना होते हैं और जो मॉथ्स में होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव थोरैक्स। थोरैक्स वो जगह होती है जहाँ पर बटरफ्लाई के लेग्स होते हैं। एंड देन वी हैव एब्डोमेन। So these are few basic structural parts of a butterfly. Okay, so quiz time. So I think everyone is familiar now with the chat, and जितने जल्दी हो सके please type करेगा answers if you know. And Meenakshi, do let me know if people are writing the answers. Okay, Yes, first yes, they question is, are writing. okay, Yes. cool, cool. So जैसे रजत ने बताया था कि butterflies में कितने legs होते हैं? How many legs do butterflies have? They are writing 6. Correct. Majority are writing 6. Nice, very nice, very nice. So butterflies के 6 legs होते हैं, very good. Next, so butterflies have dash on the wings that make them different from all the other living animals. ऐसा क्या है बटरफ्लाई के विंग्स पे जिसको वो इतना जिसकी वजह से बटरफ्लाई इतनी खूबसूरत दिखती है और वो बाकी एनिमल से अलग होती हैं? कुछ तो है जो रजत ने बताया था कि ऐसा कुछ होते हैं विंग्स पे। They are writing scales. करेक्ट, करेक्ट, स्केल्स, बिकॉज दीज आर द स्केल्स व्हिच गिव देम द कलर। क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा है साइंस में, सो जो स्केल्स होते हैं वो इस तरीके से विंग्स के ऊपर अटैच्ड होते हैं कि बहुत सारे कलर्स है जो जनरेट डायरेक्टली पिगमेंट से नहीं हो पाते हैं, तो वो थ्रू सनलाइट होते हैं। जैसे जो ब्लूज बताई है रजत ने, लिंकनेडे फैमिली में जो आती है, तो जो छोटी ब्लूज होती हैं, अगर अब शायद अब डेफिनेटली इसके बाद नोटिस करेंगे, जो छोटी छोटी बटरफ्लाईज होती है उसमें हल्का सा टिंच ऑफ ब्लूइश कलर दिखता है। तो वो सारा रियल कलर नहीं है, रियल पिगमेंट से बना हुआ नहीं है। जो लाइट सनलाइट पड़ती है तो ये स्केल्स पे जब पड़ती है, स्केल्स के एंगल इस तरीके से रहते हैं कि उसमें से सिर्फ ब्लू कलर बाहर निकलेगा। सो इस वजह से हमको वो ब्लू कलर दिखता है। सो स्केल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन defining the color of a butterfly. So you are very correct. Scales on their wings. Next, so do butterflies grow in size? एक बार जब प्यूपा से बटरफ्लाई निकल जाती है उसके बाद वो और बड़ी होती है कि वैसी की वैसी जितनी जैसी निकली है वैसी ही रहती? The answer is no. They are writing. करेक्ट, बहुत इंटेलिजेंट है ऑडियंस, ऐसा लग रहा है मुझे। Yes. नाइस, नाइस, सो वेरी करेक्ट। वो जो जब प्यूपा से निकलती है वो उसका फाइनल स्टेज होता है और वो उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है, वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन के ही निकलती है। देन हाउ डू बटरफ्लाईज अंडरस्टैंड विच प्लांट इज द वन ऑन विच दे ले एग्स? ऐसा हमको तो पता है कि ये जो पौधा है इसको तुलसी कहते हैं, ये जो पौधा है इसको गुलाब कहते हैं, हम देख के पहचान सकते हैं। बट बटरफ्लाईज में इतनी इंटेलिजेंस कैसे है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सिमिलर दिखते हैं और हर एक बटरफ्लाई का एक अलग सेट ऑफ होस्ट प्लांट होता है, ऐसे पौधे जिसपे वो अंडे देती है। तो वो कैसे पहचानती है कि यार ये तो वही पौधा है जिसपे मैं अंडा देती हूँ? अगर थोड़ा सा भी आइडिया यू कैन टेल, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली लेट यू। Majority are writing by sensing through their legs. ओके, मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। Yes. वाओ, 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 मतलब सब लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया है। थ्रू द लेग्स, वेरी करेक्ट आंसर। इनके पैर्स में ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो
जिससे इनको जेनेटिकली ये पता चल जाता है कि हाँ ये वही वाला प्लांट का लीफ है जिसपे मैं एग ले करती हूँ। तो वो हर बार अगर आप देखेंगे अब बटरफ्लाई बार बार अपने पैर से टच करती है वो लीव्स को और पहचानती है आर दीज दोज लीव्स ऑन विच आई ले एग। वो जब पहचान लेती है उसके बाद फिर उसमें एग ले करती है। वो देखती है आसपास का इन्वायरमेंट सही है कि नहीं, जो प्लांट है वो सर्वाइवल उसका हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें देखती है। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे हम हमारे मुंह से टेस्ट करते हैं राइट, हमको अगर हम नींबू पानी पीते हैं तो एकदम सिट्रिक फील आता है, हम एकदम से किसी ने करेला खिला दिया तो एकदम से कड़वा कड़वा लगता है, बिकॉज वी टेस्ट विद आवर माउथ। सो सेम गोज विद बटरफ्लाइज, दे टेस्ट विद द लेग्स, क्योंकि हर एक पौधे के फेरोमोन्स अलग होते हैं, हर एक पौधे की बनावट अलग होती है, टेक्सचर अलग होता है, जो वो अपने पैरों से सेंस करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ लॉन्ग डू बटरफ्लाइज लिव? कितने टाइम तक बटरफ्लाइज जी सकती है? Be it a day, be it a month, what are your guesses? 15 days, 5 to 4 weeks, 4 to 5 weeks, Okay, 5 to 6 correct, weeks. correct, everyone is correct. Basically it depends on the butterfly. हर बटरफ्लाई पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ साइकिल कितने टाइम तक सीमित है। जैसे ब्लूज हैं, उनकी जो छोटी बटरफ्लाईज होती हैं, जैसे ब्लूज में जो आती हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा नहीं रहती है, 7 to 15 डेज मैक्स होती है। कुछ बटरफ्लाईज है जैसे कॉमन रोज, क्रिम्सन रोज, इनकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा रहती है, इट कैन गो अप टू 6 months। तो बहुत सारी बटरफ्लाईज है जो कुछ दिन के लिए जिंदा रहती है और बहुत सारी बटरफ्लाईज है जो कुछ मंथ्स तक के लिए जिंदा रहती है। सो एवरीवन इज करेक्ट ऑन दैट, हर किसी ने जो आंसर्स दिए हैं वो सारे करेक्ट हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। स्लाइड मूव हुआ क्या? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी। Meenakshi, am I audible? Yes. Yeah. Is my slide moving? No, it's stuck. Okay. It shouldn't happen usually. Yeah, it is happening now. Good. Okay. So please keep a keen eye on a picture which is coming up. और अगर आप लोग 90s से हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये मूवी कौन सी है और इस कैरेक्टर का नाम क्या है। तो जितने जल्दी हो सके चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके, आइडेंटिफाई द मूवी एंड द कैरेक्टर नेम। ओके, हियर इट कम्स। मैं पक्का कह सकता हूँ 99% ऑडियंस ने ये मूवी जरूर देखी होगी और ये कैरेक्टर जरूर पहचानते होंगे क्योंकि उनके चाइल्डहुड मेमोरीज। Chat box is full with जादू। ओके, करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट, इट इज जादू। ओके, सो ये तो जादू, ये तो मूवी है, हम तो आज बटरफ्लाइज के बारे में बात करने आए। तो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट जादू इन दिस सेशन ऑफ बटरफ्लाइज? कैन एनीवन टेल कि मतलब बटरफ्लाइज और जादू में ऐसा क्या रिलेशन है? दोनों में एक बहुत कॉमन चीज है। थोड़ा सा सोचिए, आपको क्लिक हो जाएगा। Yes. They are writing sun basking, sunlight. मुझे ऐसा लग रहा है ऑडियंस में बहुत सारे Somebody is एक्सपर्ट्स writing हैं। flying. Both needs light. ओके, Sunlight. करेक्ट करेक्ट, सो द सनलाइट इज द वेरी करेक्ट आंसर। जैसे ऋतिक रोशन जब जादू से पूछते हैं कि तुम्हें खाना क्या है, तो वो अपना हाथ निकालता है और बोलता है धूप। तो सेम गोज विद बटरफ्लाइज। सो बटरफ्लाइज आर कोल्ड ब्लडेड इंसेक्ट्स, यानी उनका जो खून होता है वो कोल्ड ब्लड होता है। और कोल्ड ब्लड का मतलब ये होता है कि वो अपने खून को, बॉडी टेम्परेचर को बेसिकली रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते तो बाहर के इन्वायरमेंट से एनर्जी लेके उसको रेगुलेट करते हैं। तो बाहर के एनवायरमेंट से कैसे लेंगे? इफ दे वांट हीट दे विल गेट नेचुरली फ्रॉम सनलाइट। तो जैसे ही सूरज, तो अगर आप देखेंगे एकदम सुबह सुबह जब सूरज नहीं निकला है तो आपको बटरफ्लाइज इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा, सूर्य की किरणें थोड़ी सी पड़ेगी, इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म होगा, तो बटरफ्लाइज आपको दिखना चालू होगी। क्योंकि बटरफ्लाइज के ऊपर जब तक सन की रेज नहीं गिरेगी या जब तक वो एरिया थोड़ा सा हीट अप नहीं होगा तो इनकी वेन्स गर्म नहीं हो पाएगी। जो इनके खून है वो रेगुलेट एक एम्बियंट टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाएगा,
जब वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे पहुंचेगा तभी जाके वो अपने विंग्स फ्लटर कर पाएगी और तभी उड़ पाएगी। तो सेम गोज विद जादू ऑल्सो, जब तक उसको धूप नहीं मिलेगी तब तक वो एनर्जी नहीं गेन कर पाएगा और काम नहीं कर पाएगा। तो सेम दिस इज द मेन focus behind these two characters. So butterflies and Jadoo are related like this through sunlight. So I'll now talk about a bit about Butterfly Garden from idea to implementation. So my project site was basically inside a industrial area जहाँ मैंने बटरफ्लाई का एक हैबिटेट बनाया है। उस जगह के आसपास के 20 किलोमीटर में सिर्फ फैक्ट्री थी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कंपनीज थी और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन से लेकर वेरियस वाटर पोल्यूशन टू any type of pollution you can think about that place, because it is an industrial area. So it was a very big of a challenge then, क्योंकि बटरफ्लाइज तो एक जंगली जानवर है, जंगली जानवर को एक जंगली जगह चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ वो उसको सूट कर पाए। और बटरफ्लाइज एक बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर होती है, यानी कि अगर बटरफ्लाइज कोई एरिया में दिख रही है यानी वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर फ्लोरा जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे से उग पा रहे हैं, तो वो एक इंडिकेट करती है कि हाँ ये एरिया सही है। और हमारा मेन मकसद भी ये था कि क्या हम एक इंडस्ट्रियल प्लांट के पास में या उसके प्रीमाइसेस के अंदर में एक ऐसा बटरफ्लाइज का जंगल बना सकते हैं जहाँ पर बटरफ्लाइज फ्लरिश कर पाए। सो विद दैट सेंस वी स्टार्टेड एंड आई विल शो यू सम पिक्चर्स इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स कि कैसे हमने एक नॉर्मल ज़मीन को एक बटरफ्लाई हैबिटेट में बदला एक कंपनी के अंदर। पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि बटरफ्लाई गार्डन, बटरफ्लाई हैबिटेट, ये एक बटरफ्लाई पार्क के लिए नेसेसरी कुछ कंडीशंस क्या होती है, क्योंकि बटरफ्लाई गार्डन एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर के बालकनी में बना सकते हैं, आपके आसपास के एरियाज में बना सकते हैं, स्कूल्स के ग्राउंड्स में बना सकते हैं, कंपनी प्रीमाइसेस में बना सकते हैं, यू नेम इट एंड यू कैन मेक अ बटरफ्लाई गार्डन देयर, इवन एट योर टेरेस ऑल्सो। सो it is a very good exercise for butterfly conservation which anyone can do। कोई भी इंसान है जो बटरफ्लाइज को बचाना चाहता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है, तो ये भी एक चीज़ है जो वो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ी सी ज़रूरी है बटरफ्लाई गार्डन के लिए। एक एम्बिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो बटरफ्लाइज आपको दिखेगी नहीं, वहाँ ज़रूर होगी लेकिन वो फ्लटर ही नहीं कर पाएगी और आपको फिर उतनी डेंसिटी में दिखेगी नहीं। सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जैसे एक पब्लिक प्लेस होती है वहाँ 24 आवर्स ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो इट कैन हैम्पर द एरिया एंड कैन लीड टू अ वेरी लो डेंसिटी ऑफ बटरफ्लाई। देन नो पॉइजन्स आर यूज, यानी कि एक बटरफ्लाई गार्डन ना एक आम भाषा में हम कह सकते हैं वो एक जंगल होता है। और जंगल में अगर आपने देखा होगा कहीं पर भी फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, केमिकल साइड्स यूज नहीं होते। तो एक बटरफ्लाई गार्डन भी वैसा ही है, हम पौधे इस वजह से लगा रहे हैं ताकि बटरफ्लाइज वहाँ आके उसमें से नेक्टर ले पाए, उसमें अंडा दे पाए। तो अगर उसी में हम ऐसे पॉइजन छिड़केंगे तो बटरफ्लाइज तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से देर आर नो पॉइजन्स यूज, इट वुड बी अ वेरी नेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ओवर देयर एंड it is a very good exercise because you will able to understand the science behind of using of growing plants without use of any poison। and और नेचर को है ना अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने देना पड़ेगा। मतलब बटरफ्लाई गार्डन में हम पौधे लगा रहे हैं, बहुत सारा हो सकता है कि अगर आप जब लगा रहे हैं तो कंडीशन से फेवरेबल नहीं होगी कि वो पौधा सर्वाइव कर पाए, बट धीरे धीरे इवेंचुअली द प्लेस विल अडेप्ट इटसेल्फ and then slowly the place will flourish। so नेचर की वो तो नेचर का काम है और नेचर विल अडेप्ट इटसेल्फ। हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि हम उस एरिया को कैसे अच्छा बना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो नेटिव है, यानी कि जो आपके एरिया के स्थानीय पौधे हैं, जो आपके रीजन के स्थानीय पौधे हैं वो लगाएं, क्योंकि स्थानीय पौधे बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो ज़्यादातर अगर हम देखा जाए तो वो ज़्यादातर होस्ट प्लांट्स होते हैं बहुत सारे बटरफ्लाइज के, क्योंकि लोकल बायोडाइवर्सिटी में अगर वो जो स्थानीय पौधे वो ज़्यादा अच्छे से उग रहे हैं और वो थ्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो स्टार्टिंग से बटरफ्लाइज देते हुए आई है अंडा वो उस प्लांट को चूज कर रही हो। देन थोड़ा सा लेस इंट्रेसिव मेथड्स ऑफ गार्डनिंग, यानी हम यूजुअली जब हम गार्डन बनाते हैं, कोई भी एक अर्बन गार्डन देखते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ हेजेस है, वहाँ पर जो कंटिन्यूस कटिंग होती है, वहाँ पर एकदम ऐसे परफेक्टली शेप्ड प्लांट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि अगर हम उतनी ज़्यादा शेपिंग करेंगे प्लांट्स की तो जो बटरफ्लाइज ने अंडे दिए होंगे, कैटरपिलर्स होंगे, हम उनको वहाँ से डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। तो थोड़ी सी चीज़ें हमको अब
नेचर के लिए करनी होगी, ना कि हमारे एस्थेटिक लुक के लिए। क्योंकि जब हम बटरफ्लाई गार्डन बनाएंगे और आप जब खुद ही से देखेंगे कि कितना सुंदर वो अपने आप बन के आता है। बिकॉज बटरफ्लाई गार्डन बनाने के लिए किसी को आर्किटेक्ट होना ये कंपलसरी नहीं है, बस आपको खुद से वो इमेजिन करना है कि मेरे को ये एरिया कैसे दिखना चाहिए, और वो कोई भी इंसान कर सकता है। यू जस्ट नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। ओके, सो आइडलाइजिंग अ बटरफ्लाई गार्डन। तो बटरफ्लाई गार्डन कैन बी इजीली कनेक्टेड टू आवर होम। मतलब आप अपने घर के छोटी सी जगह पर भी अगर कुछ होस्ट प्लांट लगाएंगे, कुछ नेक्टर प्लांट लगाएंगे, बटरफ्लाइज अपने आप आती है अगर उनको वो इन्वायरमेंट फेवरेबल लगेगा। सो देर इज नॉट अ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हर कोई बिजी रहता है अपनी लाइफ में, तो वो कैसे बटरफ्लाई कंजर्वेशन में अपना पार्ट निभाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है ना कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो बायोडाइवर्सिटी को सेव करे, वो अपने तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाए। सो देर आर वेरियस वेज। जैसे हम प्लांटेशन करते हैं, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि जो हम प्लांटेशन करते हैं एरिया में, वो थोड़ा सा नेटिव स्पेसिफिक हो, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय पौधे हम उसको प्लांट करें, ऐसे पौधे जो बटरफ्लाइज के लिए फेवरेबल हो। तो हम ऐसे करके भी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं और काफ़ी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन डिज़ाइन इज मेंट टू बी इलस्ट्रेटिव एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिव, यानी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है कि एक गार्डन जैसे ही दिखना चाहिए। उसमें अलग अलग टाइप के पौधे हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के एरियाज हो सकते हैं, एंड इट कैन बी अप टू योर इमेजिनेशन हाउ यू वांट टू मेक दैट प्लेस। ओपन स्पेसेस और प्लांटिंग स्पेसेस, ये दोनों हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। यानी कि एक ओपन स्पेस, थोड़ी सी एरियाज खुले भी रखने हैं ताकि बटरफ्लाइज वहाँ सनबास्क कर सके, या कोई अगर ऐसे बारिश के टाइम में तो ऐसे हेजेस होने चाहिए जहाँ पर वो छुप सके, और मिक्सचर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए, क्लाइंबर्स होने चाहिए। मतलब एक जंगल में कैसे रहता है, देयर आर मिक्सचर्स ऑफ प्लांट्स व्हिच आर इन एंड अराउंड दैट प्लेस। देन फ्लू क्लस्टर्स ऑफ होस्ट एंड नेक्टर प्लांट्स, कुछ ऐसे बंच ऑफ नेक्टर और होस्ट प्लांट अगर हम लगाएंगे तो वहाँ हमको थोड़ी सी ज़्यादा डेंसिटी में बटरफ्लाइज दिखेंगी। तो दीज आर फ्यू थिंग्स which you need to take care when you make a butterfly garden. And now I'm going to talk about 4 types of plants which are very necessary for developing a butterfly garden. 4 टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट यानी ये वो पौधा होता है जिसके ऊपर तितली अंडा देती है। नेक्स्ट इज नेक्टर प्लांट। नेक्टर प्लांट यानी वो पौधा जिससे तितली रस लेती है, क्योंकि तितली के पास कोई टीथ नहीं होते हैं काटने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ रस पे सर्वाइव करती है। जो रस वो फूलों से लेती है, देन काफ़ी ज़्यादा राइप्ड अगर कोई फ्रूट है उससे लेती है, मरे हुए जानवरों से लेती है, देन कीचड़ से कुछ टाइप के मिनरल से जो वो सक करती है। तो बटरफ्लाइज बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लविंग होती है, क्योंकि वो हमको कुछ हार्म पहुंचा ही नहीं सकती, वो हमको काटेगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, हमारे हाथ पे बैठ जाएगी तो हमको कुछ भी नहीं होगा उससे। सो बटरफ्लाइज आर रियली रियली गुड animals to study on, to embrace on. And so okay, let's move on to next one. The next is alkaloid. So this is a plant which you don't see very often, इतना आसानी से नहीं मिलता है, but try to find out कहीं पर अगर आपको ये मिल जाए, अगर आप बटरफ्लाई गार्डन या घर पे अगर गार्डनिंग भी कर रहे हो तो ये एक लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ टाइप की ऐसी बटरफ्लाई स्पीशीज है, जैसे ब्लू टाइगर है, प्लेन टाइगर है, कॉमन क्रोज है, जिनको एक टाइप का केमिकल चाहिए होता है जिससे वो एक सेंट बनाते हैं, एक फेरोमोन बनाते हैं, जिसको रिलीज करके फीमेल्स को लुभाते हैं। और ये फेरोमोन एल्कोलॉइड प्लांट्स में होता है। इस वजह से जब हम ये पौधा बटरफ्लाई गार्डन में लगाते हैं तो जो ये टाइगर्स होती हैं वो 100 के बंच में एक साथ आके उस प्लांट पे चिपक जाती है, तो वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। जब हम पास जाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज आर देयर, वो एकदम बंच में दिखती है। तो एल्कोलॉइड प्लांट इज ऑल्सो नेसेसरी पार्ट ऑफ अ बटरफ्लाई गार्डन। नेक्स्ट इज हेजेस। तो सपोज करते हैं कि हर टाइम तो हम 12 महीने तो ऐसा होता नहीं है कि हमको सिर्फ सन ही मिलेगा। बहुत सारे टाइम बहुत ज़्यादा शेडिश एरिया होता है, या फिर बादल आ जाते हैं, बारिश होती है, तो उस टाइम पे बटरफ्लाइज तो फ्लटर करेगी नहीं। तो उस टाइम हम अब बटरफ्लाइज क्या करेगी, वो ऐसे पौधे या ऐसे एरियाज ढूंढने की कोशिश करेगी जहाँ जाके वो छुप सके, हाइड कर सके। तो इसलिए हम हेजेस भी लगाते हैं ताकि बटरफ्लाइज को एक एरिया मिल पाए जहाँ पर वो जाके छुप पाए। क्योंकि अब नाइट में तो वो जाके कहीं पर ये करेगी नहीं, फ्लटर करेगी नहीं, क्योंकि सनलाइट होगा नहीं, गर्मी होगी नहीं। तो इसलिए उनको आराम करने के लिए, छुपने के लिए हेजेस लगाई जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज लेपिडोप्टेरा सर्विस। तो बेसिकली बटरफ्लाई सर्विस के बारे में मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। बटरफ्लाई सर्विस, जैसे रजत ने बताया कि
हर एक इंसान बटरफ्लाइज के बारे में जान सकता है और उनको स्टडी कर सकता है। अगर हम कुछ ऐसी स्पीशीज जो हमारे घर के आसपास में कॉमनली दिखती है उनके बारे में जान ले, तो वो हमको फिर धीरे धीरे हम देखेंगे तो वो दिखने लगेगी तो हम उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे कितने क्वांटिटी में दिख रही है, कहाँ दिख रही है, और धीरे धीरे हम उनकी बिहेवियर्स नोट कर पाएंगे। तो वही सिटीजन साइंस है बेसिकली, सिटीजन्स को ही साइंटिस्ट बनाना इस तरीके से कि वो एक माइंडसेट डेवलप कर पाए। एंड हियर लेपिडोप्टेरा सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये तो हम आसपास में अर्बन एरियाज में करते हैं, लेकिन हम जब जंगल में ऐसे सर्वेस करते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ डाइवर्सिटी दैट यू कैन नॉट फाइंड इट इन अर्बन एरियाज, उसके लिए आपको जंगल चाहिए होते हैं। तो जंगल में यूजुअली अगस्त से नवंबर का सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें हम सर्वेस करते हैं। और जैसे कि अब ये तो जंगल है, जंगल तो बहुत बड़ा होता है, तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर लाइन एक मार्क करते हैं कि हम इस पाथवे पे चलेंगे और इसके आसपास के 5 to 10 मीटर, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड है जिसमें हम 5 to 10 मीटर्स के एरिया में अगर कोई बटरफ्लाई दिख रही है उसको नोट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन सी है। फिर हम ये भी देखते हैं क्योंकि हर जगह तो बटरफ्लाइज दिखेगी नहीं, तो ऐसे कौन से एरियाज हो सकते हैं जहाँ बटरफ्लाइज दिखे। जैसे कहीं पर कोई स्ट्रीम हो तो स्ट्रीम के आसपास में थोड़ा कीचड़ होगा, और अगर कीचड़ होगा तो बटरफ्लाइज वहाँ पर मड पडलिंग करने आएगी। तो मड पडलिंग बेसिकली एक वो फिनोमिना होता है जिसमें बटरफ्लाई को सारे मिनरल्स नेक्टर से नहीं मिल पाते हैं फूल के, तो वो कुछ मिनरल्स उसको कीचड़ से भी मिलते हैं। जैसे और गोबर से जो एनिमल्स पॉटी करते हैं उससे भी ये करती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, पोटेशियम होता है, और भी अलग टाइप के एनिमल मिनरल्स होते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं। सो दिस इज माई साइट। मैं सारे फोटोज एक्चुअली यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट कम्स इन द कंपनी प्रीमाइसेस, बट देयर आर फ्यू फोटोज दैट आई हैव शेयर्ड। तो ये एक बेसिकली 20 by 200 मीटर्स का एक स्ट्रेच्ड लॉन है जिसको हमको कन्वर्ट करना था एक बटरफ्लाई हैबिटेट में। इसके जस्ट बाजू में ही वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है विच इज रनिंग 24 आवर्स। सो इट वॉज बिट ऑफ अ चैलेंज कि हम कैसे इस एरिया को चेंज करते एक बटरफ्लाई हैबिटेट में। एंड वो ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं था, ये भी एक एस्पेक्ट था कि जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं उनके अंदर वो माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए कि बटरफ्लाइज भी ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिनसे हम लगाव कर रख सकते हैं और जो हमें माइंड पीस दे सके। सो इट वॉज बिट ऑफ अ चैलेंज बिकॉज टॉकिंग टू देम, टेलिंग देम कि हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, वो काफ़ी हार्ड था स्टार्टिंग के टाइम में। उस टाइम में जब हम बटरफ्लाइज के लिए सिर्फ सर्वेस कर रहे थे वहाँ कंजिक्यूटिवली, वहाँ एम्प्लॉयज़ भी पूछते थे कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई बटरफ्लाइज हमको दिखती नहीं है, आप लोग यहाँ कैसे करेंगे। सो एक माइंडसेट होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें कैसे होगी क्योंकि आज तक कभी करी नहीं गई है। तो उस चीज़ से टैकल करके देन वी स्टूड फॉरवर्ड, बिकॉज एक आम इंसान वही सोचेगा कि यहाँ पर बटरफ्लाइज दिख नहीं रही है तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे जो यहाँ पर बटरफ्लाइज आएगी। देन वी स्टार्टेड प्लांटिंग होस्ट प्लांट्स देन नेक्टर प्लांट्स। तो पहले नॉट मोर देन 30 to 35 स्पीशीज वहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई की थी विद इन 2 सीजन्स। बट इवेंचुअली जैसे हम होस्ट प्लांट्स और नेक्टर प्लांट्स वहाँ लगाने चालू कर दिया हमने, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ डेंसिटी भी बढ़ती गई और बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी भी बढ़ती गई। Then at the last we stretched to 70 species inside a industrial plant. So that was a very big achievement क्योंकि हम अगर अर्बन एरियाज में देखें तो इतनी डेंसिटी में बटरफ्लाइज दिखती ही नहीं है, इतनी टाइप की बटरफ्लाइज दिखती नहीं है। लेकिन हमको ये चीज़ एक ऑब्जर्वेशन करने मिला कि हमको 70 से ज़्यादा स्पीशीज एक इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर में मिली। और अब जब हम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मोर देन 500 to 600 डेंसिटी में बटरफ्लाइज दिखती है। इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ बटरफ्लाइज है क्योंकि बटरफ्लाइज ने वो एरिया को अडेप्ट कर लिया है। अब वो जो जंगल हमने बनाया है वो वहाँ अच्छे से फल फूल रही है, अंडे दे रही हैं, वहाँ से नेक्टर ले रही है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और इससे बड़ी चीज़ जो हुई है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है अब वो समझने लगे हैं कि बटरफ्लाइज क्यों ज़रूरी है। अब वो खुद भी बोलते हैं कि अब मैं भी मेरे घर पे ऐसे पौधे लगाता हूँ, अब मैं भी इस तरीके से मेरे बच्चों को सिखाता हूँ कि ये एक बटरफ्लाई का कैटरपिलर है, या हमको इस तरीके से करना चाहिए। तो देयर इज चेंज ऑफ माइंडसेट बट जस्ट बाय डूइंग अ चेंज इन द पर्सपेक्टिव। तो it this is how the project was successful. Meenakshi, I have a few minutes, right? Or should I speed up? Hello, Meenakshi?
Okay. Hello. Abhishek, we are having a few questions in lineup, Okay. so Cool. better Cool. you finish up the presentation and later on Cool. we will Cool. take the question. Cool. That is really nice to see. आप लोगों के पास कुछ questions है मेरे लिए. I hope to answer them. So this was the first plant that we planted there. This is an अमलताश. अगर आपने सुना होगा अमलताश का पेड़, जिसमें येलो कलर्स के बहुत सारे बंच में फ्लावर्स आते हैं जून सीजन में. तो जब हमने ये प्लांट किया था तब मुझे भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर बटरफ्लाइज अंडा देगी कि नहीं, कितने देगी. सो वी वेर ऑल्सो ऑन अ डिलेमा कि अब क्या होगा. बट आफ्टर प्लांटिंग कुछ दिनों के बाद जब मैं वापस राउंड मार रहा था उस एरिया में कि देखते हैं कुछ एक्टिविटीज हुई है कि नहीं, कुछ बटरफ्लाइज ने अंडा दिया है कि नहीं, आई सडनली गॉट टू सी सम वाइट डॉट्स ऑन द प्लांट. और जब मैंने पास जाके देखा तो पता चला कि ये तो बटरफ्लाइज ने अंडे दिए हैं, और इतने सारे थे वहाँ, मोर देन 70 एग्स वर्थ है. तो इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर मैं ये समझ गया था कि हाँ, अब यहाँ पर बटरफ्लाइज के लिए इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है और यहाँ पर बटरफ्लाइज सर्वाइव करेगी. सो दिस हियर इफ यू कैन सी ऑन द सर्कल, दीज आर स्मॉल एग्स ऑफ कॉमन इमिग्रेंट बटरफ्लाई. इसी में से ये सेम प्लांट का फोटो है जिसमें से ये बहुत सारे कैटरपिलर्स दिख रहे हैं आपको. दिस आर मोर देन 9 कैटरपिलर्स. तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर इतने सारे एग्स है, उसमें से इतने सारे कैटरपिलर्स निकल रहे हैं और इतना छोटा सा प्लांट है, तो ये तो इतने सारे कैटरपिलर्स है कि वो तो सारे के सारे पत्ते खा जाएंगे इस पौधे के, और अगर सारे के सारे पत्ते खा जाएंगे तो वो पौधा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. तो नेचर को जो बैलेंस मेंटेन करना, वो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा. तो वैसे तो नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो अगर ऐसा है तो फिर नेचर ने ऐसा क्या सोचा है जिससे कि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए. आप चैट बॉक्स में लिखिएगा. आई विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड टू सी व्हाट योर थिंकिंग इज ऑन दिस. सो दिस इज हाउ द बटरफ्लाई लुक्स लाइक, एंड आई विल टेल यू बेसिकली क्या होता है कि नेचर का कहना है कि अगर तितली 100 अंडे भी देती है, उसमें 100 कैटरपिलर्स निकलते हैं, बट मुझे आखिर में सिर्फ 2 ही तितली वहां से निकले, उतना ही चाहिए. मुझे सिर्फ चाहिए कि 100 अंडे में से अगर 2 तितली बाहर आ रही है, यानी 2 तितली सर्वाइव कर रही है, बस मुझे उतना ही चाहिए. इन्वायरमेंट को उतना ही रिक्वायरमेंट है. बाकी के जो है, जो कैटरपिलर्स होते हैं, वो फूड चेन के पार्ट बन जाते हैं. यानी कि जो चिपकली है, स्पाइडर्स है, बर्ड्स है, उनके फूड चेन में आ जाते हैं. उनके लाइफस्टाइल में वो एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो अगर उनको उनके बच्चों को कुछ खिलाना है, उनके यंग वंस को जो फीड करना रहता है, तो दीज आर हाई प्रोटीन एलिमेंट्स दैट दे कैन फीड देम. सो दिस इज हाउ नेचर controls or maintains a balance in the environment. Okay, so this is a plain tiger caterpillar butterfly which Rajat has already shown कि उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है. So मैंने बस ये फोटो इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, इससे पहले वाली जो हमने फोटो देखी थी, इसमें कैटरपिलर्स, तो जो कैटरपिलर्स थे वो तो एकदम ग्रीन कलर के थे, पत्ती के साथ कैमोफ्लेज हो रहे थे, राइट. लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर के हैं, तो इसमें तो बर्ड्स और चिपकली को आसानी से दिख जाएगा कि यार ये तो कैटरपिलर, मैं तो जाके खा लूंगा. बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है. अगर आपने आक नाम का पौधा सुना होगा, जो हिंदी रिलीजन में शंकर जी को चढ़ते हैं, जिनके फूल जिसमें व्हाइट कलर का दूध निकलता है, इफ यू रिमेंबर दैट, तो ये बेसिकली कैटरपिलर्स उन पे फीड करते हैं. और वो जो व्हाइट कलर का जो केमिकल होता है, वो इन जानवरों के लिए उतना सुटेबल नहीं होता है. बर्ड्स के लिए, चिपकली के लिए उनको इतना पसंद नहीं है. सो दैट इज वाई, अब कैटरपिलर्स को तो पता है कि उनको तो कोई खाएगा नहीं इतना आसानी से, तो अगर उनको कुछ खाएगा नहीं तो वो तो कलरफुल हो सकते हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो, आराम से अपना खाना खा सकते हैं. सो दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, कि वो फीड ही ऐसे प्लांट्स पे करती हैं जो बाकी एनिमल्स के लिए उतना सूटेबल नहीं. और इस वजह से फिर जो प्लेन टाइगर हैं और बाकी टाइगर जो आगरे पे फीड करते हैं, वो भी बहुत आराम से उड़ती हैं, क्योंकि इनको मालूम है इतनी जल्दी तो मुझे कोई खाएगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ये जो केमिकल सब्सटेंस है जो मैंने कैटरपिलर ने फीड किया था, वो उनके लिए हार्मफुल है. ओके, सो दिस इज अ लाइन बटरफ्लाई. एज द नेम सजेस्ट, वो नींबू और बेलपत्र उनके फेवरेट होस्ट प्लांट्स है जिसपे वो अंडा देती है. तो अगर आपके 2 सर्कल दिख रहे हैं लेफ्ट राइट फोटोज में, तो ये जो बटरफ्लाई है ना, फर्स्ट वाले इसमें है ना, ये स्किन शेड कर रही है, क्योंकि बटरफ्लाईज कैटरपिलर्स धीरे धीरे जब फीड करने लग जाते हैं, वो इतने तेजी से फीड करते हैं कि
उनका जो साइज है वो बहुत जल्दी बड़ा होता है, और जब बहुत जल्दी बड़ा होता है तो उनकी स्किन उतनी स्ट्रेच नहीं हो पाती, इसलिए वो बार बार अपनी स्किन रिलीज करते हैं। और ये जो बटरफ्लाइज है इनको इंस्टार्स कहते हैं। जैसे जैसे वो अलग अलग इंस्टार्स में जाते हैं, अडल्ट की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर आप देख सकते हैं राइट वाले फोटो में मैंने एक और सर्कल मार्क किया है जिसमें ये सेम कैटरपिलर है जो छोटे स्टेज में है। तो अब इसमें इन्होंने कलर इसलिए चेंज किया है क्योंकि जो ग्रीन कलर है, अब ये इतने बड़े हो गए तो ये अब इनके बार्क से इनका कलर मैच नहीं हो सकता है, इस वजह से ग्रीन कलर पत्ती में आसानी से मैच हो जाएगा। और जो छोटे रहते हैं तब इनके बार्क भी ब्राउन होते हैं, तो ये आसानी से उस पर हाइड कर सकते हैं। और जब ये छोटे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि किसी चिड़िया ने पॉटी की है, उनका कलर इस तरीके से होता है, तो वो तब आसानी से हाइड कर लेते हैं खुद को, आसानी से बच पाते हैं इस तरीके से। ओके, तो जब वो एक अडल्ट बटरफ्लाई, लाइम बटरफ्लाई इस तरीके से दिखती है। ओके, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मड पडलिंग क्या होता है, तो मड पडलिंग बेसिकली जब वो कीचड़ से कुछ मिनरल्स सक करती है जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं, उसको मड पडलिंग कहा जाता है। वो एक काफी, जब अगर आपको कहीं ऐसे दिखे कि हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज जमीन पे कीचड़ पे ऐसे बहुत सारी, तो बेसिकली वो मड पडलिंग कर रही है वहाँ पर, यानी कि वहाँ कीचड़ से वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो इससे मैं चाहता था कि आप लोग कुछ टेक अवे लें। और मैंने एक्चुअली मैम ने भी कहा था कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं कि वो अपने घर के आसपास में और कंपनीज और बहुत सारे एरियाज़ में, स्कूल्स और कॉलेजेस में कुछ ऐसे प्लांट करें ताकि बटरफ्लाइज को ट्रैक कर पाएँ। तो मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉर्ट करके निकाले हैं, जो काफ़ी आम है, आपको आसानी से कोई भी नर्सरी पे भी मिल जाएंगे और आप आसानी से प्लांट भी कर पाएंगे। तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ इनके बारे में। तो फर्स्ट वन इज अमलताश। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अमलताश पे इमिग्रेंट बटरफ्लाई अंडा देती है, और सीजन में इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये बहुत सुंदर दिखता है, पूरा जो पेड़ होता है वो येलो हो जाता है। दिस कैन बी प्लांटेड इनसाइड योर प्रीमाइसेस और एंड इट इज अ रियली रियली ब्यूटीफुल प्लांट। द नेक्स्ट इज बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपको पहचानना है तो 3 पत्ती एक साथ दिखेगी, दैट इज बेलपत्र। नींबू अ वेरी इजी प्लांट, हो सकता है किसी के घर में डेफिनेटली होगा, तो आप जरूर जाके देखिएगा कि नींबू पे कहीं आपको अंडा या कैटरपिलर दिख रहा है क्या। देन आक, लाइक व्हाट आई टॉक्ड अबाउट आक, जो ये भी आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा और ये आप लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बटरफ्लाइज जो इस पर अंडा देती है। वज्रदंती, वज्रदंती अगर आपने सुना होगा, एक एडवर्टाइज आता था पुराने टाइम में, वीको वज्रदंती। सो दैट वज्रदंती बेसिकली इट इज अ वेरी मेडिसिनल प्लांट और टूथ एक्स में काफ़ी काम आता है, और थोड़ा सा हार्ड है फाइंड करना, इतना आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगर थोड़े से आप रूरल एरिया में रहते हो तो आसपास में कहीं उगा हुआ आपको ये दिख सकता है। वज्रदंती इसका नाम है, और ये भी बहुत सारे बटरफ्लाई थे जो इस पे अंडा देती है। देन कैस्टर, अरंडी का पौधा, इट इज रियली कॉमन, और इस पे कॉमन कैस्टर बटरफ्लाई अंडा देती है और ये आसानी से उग भी जाता है। नेक्स्ट इज कड़ी पत्ता, ये तो हर हाउस होल्ड में मिल जाता है और काफ़ी कॉमन है प्लांट। इसमें भी बहुत सारी बटरफ्लाइज अंडा देती है और इट इज़ अ गुड प्लांट टू ग्रो इनसाइड क्योंकि मेडिसिनल भी है और बटरफ्लाई लविंग प्लांट भी है। देन नेक्स्ट इज पतर चट्टा, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रायोफाइलम। इट इज होस्ट प्लांट ऑफ रेड पियरो बटरफ्लाई और काफ़ी पॉट लविंग प्लांट है, आपको वो काफ़ी सुंदर भी दिखता है और बटरफ्लाई अट्रैक्टिव प्लांट भी है। तो आप ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप घर पे आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। आई विल वेट फॉर 10 seconds if you want to take a screenshot. And if you have any queries also, you can definitely contact Meenakshi ma'am and I will definitely help you with the host plants of your region. But these are very easy plants to find and then grow. So इससे definitely I can assure you कि कुछ टाइम में ज़रूर बटरफ्लाइज आके आपके यहाँ पर एग ले कर सकते हैं। इवन फॉरेस्ट नर्सरीज पे प्लांट्स काफ़ी इजीली अवेलेबल है। नेक्टर प्लांट्स, कुछ ऐसे नेक्टर नेटिव प्लांट्स भी हैं जिनको आप अपने घर के आसपास में लगा सकते हैं, जो काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं और बटरफ्लाइज को काफ़ी अट्रैक्ट भी करते हैं। सफ़ेद चित्रक, जिसको सॉरी यहाँ बॉटनिकल नेम गलत हो गया, प्लम्बैगो जेलनिका भी कहते हैं। चित्रक आपको नॉर्मल कमर्शियल नर्सरीज में मिल जाएगा, नॉट अ हार्ड प्लांट टू फाइंड। निर्गुडी, निर्गुंडी इज ऑल्सो टिपिकल प्लांट बट इतना आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको मिल जाता तो डेफिनेटली अपने आसपास के एरियाज में लगाइए। और डे जास्मिन, जिसको दिन का राजा भी कहते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगा एंड इट इज़ अ वेरी बटरफ्लाई लविंग प्लांट। बहुत सारी बटरफ्लाइज आप इससे नेक्टर लेती हैं। और एक्जोरा आपने काफ़ी देखा होगा, एक्जोरा इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लांट फॉर नेक्टर फीडिंग बटरफ्लाइज।
एंड पेरिविंकल जिसको हम सदाबहार भी कहते हैं, जो 12 ही महीने आपको इसमें फूल दिखेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्लांट टू ग्रो, दो इट इज़ अ इंट्रोड्यूस्ड प्लांट, नॉट अ नेटिव वन, बट इट डजंट एग्रेसिवली ग्रो, तो आपके गार्डन में भी काफ़ी सुंदर दिखेगा और बटरफ्लाइज के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। रंगून क्रीपर, अगर आपको ऐसे कोई क्लाइंबर या ऐसे कुछ क्रीपर्स लगाने हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर रंगून क्रीपर, ऑल्सो इजीली अवेलेबल। पिकॉक फ्लावर, ये काफ़ी अगर आप कमर्शियली पाथवेज पे तो काफ़ी लगाते हैं, और इट हैज़ अ वेरी गुड बंच ऑफ ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स अवेलेबल इन रेड एंड yellow colors, so this is also a good shrub which you can plant. And verbena is a small herb and a very butterfly loving plant. This can be also found in uh, various nurseries. तो मेन मकसद हम बटरफ्लाइज का देखना ये है कि ये बेसिकली एक एक्सक्यूज है कि हमको बाहर जाने का मौका मिले, ताकि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी अच्छी हो पाए। कि फिजिकल हेल्थ, आप थोड़ा सा चलेंगे, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, आप जब एरियाज में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो आपकी बिजी लाइफ है उससे थोड़ा सा भटकेगा। मेंटल हेल्थ थोड़ा सा अच्छी होगी, क्योंकि आप ऐसे जानवरों को देखोगे जो सुंदर दिखते हैं, आसपास में आपके आ सकते हैं, आप उनके तरफ अपना ध्यान केंद्रित करोगे। जब इन सब चीज़ों से आपको मेंटल पीस मिलेगा, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नेचर वेरी डीपली, एंड इट विल रियली फील सूदिंग। एक बार आप जरूर करके देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बटरफ्लाई आपके आसपास में कौन सी दिखती है, एंड यू विल डेफिनेटली लव द way they behave, and you will fall in love with butterflies like what I did. So that is all from my side. Happy butterflying. आपको कुछ भी doubts हो आप definitely पूछ सकते हैं, और कुछ भी रहेगा you can definitely contact me, Rajat, Meenakshi ma'am. We all are ready to help. So happy butterflying. Thank you, sir. Now, there are few questions which I would like to ask you. Sure. Already you have covered the alkaloid producing plants as host plants. So that was a question, and you have specified the names. Then there is a question from Prabhu Yogi that what is the use of tires, and how do eggs or butterflies survive in heavy rains? Okay, what is the use of tires? Yes. Okay, I don't know sorry. from which slide they have seen. Okay, so basically it was the butterfly garden that we were making. It was of a tire manufacturing plant. So I wanted to induce something that there were the scrap tires which were readily available for me. So I thought, why not to use them and portray them that we are also using tires in a butterfly garden to make a butterfly habitat. So there were various mud puddling sites that we made with butterflies and sand. So that is where I use tires. So what was the second part? Sorry, I forgot. Second question is, please give the nutrients name majority consumed during mud pudding by Divya. Okay, so basically there are some salts, potassium, and there are various other chemicals, but the main majority that the butterflies require is salts and chemicals. Sorry, potassium, which are not easily available from nectar, because nectar doesn't contain these in a large quantity, and in the various butterflies they require a large amount of salts and potassium to gain their biological changes that they need. So there are few, but there are many others, but they are more technical, and you know, it depends on the type of mud puddling areas, from गाय का गोबर to mud which you can see easily after rains. So there is a question similar to it. Can we make it on terrace mud pudding? Yeah, definitely. You take your big pot, or take a small drum, and cut it into half. Just put some mud, sand, lots of sand and mud, and some stones over there, and make it a bit of wettish area. मतलब कीचड़ कैसे होता है, बस आप वैसे बनाइए, और हल्का सा, मतलब एकदम ज़्यादा भी धूप नहीं होनी चाहिए, हल्की सी शेड जैसा होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर आपको एक स्ट्रीम दिख रही है, उसके आसपास में पत्थर है और हल्की सी फिल्टर होके धूप आ रही है, वैसा अगर आप इन्वायरमेंट वहाँ बनाएंगे, डेफिनेटली बटरफ्लाइज क्योंकि चाहिए ही होता है मड पडलिंग एरियाज, तो वो डेफिनेटली आके मड पडल करेंगे। Okay.
Thank you so much, Abhishek. Rest question, we can take it later on. Yeah, Now, can you stop sharing? I will share a video yeah, I've by stopped. Shruti. So this is a video by Shruti. Just have a look. And we can't hear the audio.
Okay, this was a small video done as a part of dissertation by Shruti. So if there is any question related to it, kindly write in chat box. Because of some issue, the audio was not working properly, but the subtitles were there. So now I would like to request Mr. Mishal to please unmute and give insights about his eco-friendly products. Hello, hi everyone. Good morning. Um, and actually, Sir, ma'am, I'm yeah, if you could just sharing the share the, screen. yeah, thank you. So I'll just keep it very short. Firstly, I would just like to, just uh, I guess thank you, Meenakshi, ma'am, and Sustaina Greens. We've just recently started a partnership together. We're starting as an eco-friendly gifting partner. Um, and yeah, like my company name is Treeware. My brother and I started this business about 5 or 6 years ago, and we make eco-friendly essentials that are geared towards personal care and wellness. It's like a pleasure to be associated with Sustaina Greens because they're doing some fantastic work, like the seminar today. These small steps lead to big changes. So it's really great that you guys are highlighting the work that Rajat and Abhishek are doing. It really, makes a big difference, I think, to the overall awareness that people are having. So yeah, just to give you a little bit of an insight as to what we do, we try to make personal care and wellness essential. So it's things that people need, not want. And yeah, they're made in such a way that we try to reduce the impact of our products and your purchases on the environment. Uh, can we have the next slide? So just to give you a brief overview of what we do, that like principles that we follow that kind of set us apart, or like are just helping us help guide us work towards a better planet or a better environment, is that all of our products they contribute towards planting trees, hence the name Treeware. Um, this in a way kind of is largely connected to also the butterfly and the bee ecosystem. As Abhishek pointed out, there's a lot of trees and plants that are necessary for their survival. So this is something that ties into the bigger picture and just is a good symbol for nature that we feel is something that really needs balance and saving right now. Um, then we've got basically the principle that we use only natural ingredients in all of our products. That's so that they're better for you. And also they're sustainably sourced in the sense that we have a certain scale that we work with. We don't try to over harvest or overuse things from farms that we're collecting them from. Um, yeah, and the last one is that we try to be thoughtful about our packaging, either trying to switch to alternatives that are free of single-use plastics, and yeah, like essentially are a little bit easier to either reuse or recycle. Yeah, once again, I'll just like reiterate that we are proud to be associated with Sustaina Greens. You guys are doing some great work. And yeah, the partnership that we have is through gifting, and that gives people an opportunity to like learn about new and also eco-friendly alternatives that are available that can again through like people say using your wallet to vote. So that's one really important way that as an individual you can like have a larger impact. It's the kind of companies that you support, the kind of work that they do, and like where you invest your money, whether it's for daily needs or larger things as well, just to like have a look and see what the company is offering, and then like kind of contribute by purchasing from them and making use of things that they are offering. Yeah, and I would just, Nakshi ma'am, if you could just go up for a second. Since you guys are all here, you've taken the initiative to be part of this webinar, which is obviously very environmentally focused. We'd like to offer you guys the opportunity to purchase some of our products at a special discount.
again, we really do appreciate you all being here and being part of this in terms of spreading awareness, learning more about the environment, learning more about nature. And so I would I suggest that you could go and visit our website. Again, it's not necessary, of course, to buy anything, but we do have a special code that you can use for discount called Sustainer20 for 20% off. Um, yeah, and like the last thing that I would like to mention is that some of our products do use beeswax. And bees are just as important as butterflies and moths for the environment, for pollination, for like understanding which way we're headed, and being sensitive to the environment. I think there's a lot of big roles that have already been discussed, but the way that we actually, so because beeswax is actually a very unique you know like it's a unique chemical or like a composition. And we do use it in some of our products, like our balms and our deodorants. But the way that we do this is we work with suppliers that extract the beeswax, in a sustainable way, in a more responsible and ethical way, to ensure that there is this sustainable approach to how we get our materials. So yeah, I just want to let you know that it is something that we do take very seriously. We are also currently in the process of trying to develop natural alternatives, or develop recipes with natural alternatives as well. That's kind of how we evolve as a business, is to pay attention to these things and try to keep progressing in terms of the environmental impact that we're having. And it's really an honor to be associated with Sustainagaze. And thank you, Rajat and Abhishek, for a very enlightening session. There's a lot of things I learned, and I'm really looking forward to connecting with you guys as well. And hopefully actioning something where I live, which is in Alibag near Mumbai. So it's in the state of Maharashtra, and there's a lot of scope for creating habitats out here. So I'll definitely be in touch with you guys to explore this opportunity further. Thank you, Mishal. There is some question from Lata Jha. Yes, ma'am, you can speak. I have written, I got the answer from Shruti. Okay. I've written in the chat box. Chat box. And she answered. Okay. Is there any question? Okay. Yeah, there is a question like any butterfly event coming up in Pune from Saili. Rajat, So sir, yeah, for I you. guess I've answered this one. Okay. So like we are in plans, and from the next subsequent months we will be starting with some events. So yeah, stay tuned. Okay. So moving forward, I request Dr. Anjali ma'am to please proceed with vote of thanks. First of all, thank you so much, Meenakshi Madam, and the organization Sustaina Green for conducting such a beautiful, I will say beautiful, because butterflies are really very beautiful. To conduct such a beautiful webinar for the students. I'm Dr. Anjali Thakur. I'm heading the Department of Environmental Science at Parle University, and I'm very happy with this association. And I look forward that we could, convert this association in many fruitful ways, like webinars, seminars, all of this. Again, next I want to thank Mr. Rajat Joshi, who gave such a beautiful explanation about the characteristics of the butterflies, their ecological interactions, their roles and responsibilities in the ecological system. So it was a very, very good informative session, and I would like here to invite sir to the university, so that we can also develop a small habitat for the butterflies. Also, I would extend my thanks and gratitude to Mr. Abhishek Palliwal, who actually educated us that how we can develop an artificial ecosystem for the butterflies, and we can have that beautiful view every day in our own gardens, makers and terraces, or even in our the industries where we have a lot of work stress. So by seeing those beautiful butterflies,
we can get off that stress. And last but not the least, I will thank Mr. Mishal for giving us the good information about the products he's launching. And I'll definitely invite all of the speakers to university for any kind of interaction session. And many of the students who are sitting in front of me are asking, ma'am, can we go for the butterfly biodiversity study with Sustaina Green? So here is a one good opportunity again coming by this session. Thank you so much, ma'am, for conducting this such a beautiful session with us. Thank you for having a great association. Thank you so much, ma'am. I can see few hands raised up. Parth, Raja, yes, you can ask. Yes, first of all, good morning, everyone. Thank you, ma'am, for conducting this event. Basically, I had a question to Mishal. Uh, it is very good to hear that people are coming up with, nature-based products, and it is a good opportunity for a layman to connect to nature easily, directly by using the products. But I just had a question that Parth, you are not audible. hello, now I'm. Yes. Yeah, Yes. we just lost you at the question there. Can you please repeat the Yeah. question? Yes, please. My question was that the products that are being commercialized, are they cost effective? Will a normal layman buy it rather than not buying those artificial products over the natural based products? Because it is a very basic thing that we have right now moved towards buying those paper bags. But plastic bags are so cheaper that it becomes very difficult to make people understand that go for the paper bags rather than buying the plastic bags. Yeah, so thank you so much for that question. What you're saying makes absolute sense. The economic viability for natural products or products made with naturally derived ingredients definitely has a difference in cost as compared to more commercially available products. But there's two kind of ways to mitigate that. One is that normally with natural products, you need to use a lot less to have a similar impact or effect in a lot of cases to the synthetic counterpart that you would use. So that kind of helps, manage that a little bit. So just to give you an example that's relevant to our products as well, our deodorant stick is probably only like about 8 centimeters in height. It's a solid stick which uses beeswax and essential oils and coconut oil, etc. Now, the main thing about this is that the tube, even though it's so small in size, it lasts for about 3 to 4 months quite comfortably. So upon seeing the product, most people would not be able to gauge that and understand that. But when you actually practically use it, it is apparent that even a little bit can go a long way. So I think that's one thing that people need to somewhat mentally overcome to understand that you can use a lot less. It is a lot more potent than the synthetic counterparts. That's one thing. And the second thing is that the Indian market is changing. I think as people become more aware of the kind of impact that these products have on their own body as well, a lot of the time, things that we apply on the skin actually mostly get absorbed directly into the body. There aren't many filters. Like when you eat or drink something, your stomach or your liver is like kind of doing a lot of the detoxifying from those things to eventually, like make use of what you're putting in your body. When we do that for our skin, that isn't the case. So I think as people, and I encourage people to go and, like do a bit of research, become aware of what's in the products that you use and the kind of effect that they have on the body as well, because it's like a long-term thing. It's like kind of like if you spend like more effort and time trying to improve the things that you ingest, not just products wise, but like not on your skin, even in your body, what you eat and stuff, it does like show its
benefits down the line. Whereas, like someone maybe who eats a lot of junk food, a lot of oily stuff, you will end up dealing with a lot of medical issues that eventually you do end up paying for in some way or the other. So the key is, I think, in having a little bit of foresight over there, knowing that, okay, the products that you're using on your body or the things that you're consuming, eating, have that kind of effect on the body, and that you make that change initially and be preventative rather than do it as fixing a problem. So I'd say that those are the two things. One is that less is more, like you use less of our products and you still get the same kind of outcome. And the second one is look at it as kind of like an investment. Uh, yeah, and I think people are starting to look at things that way, like more so in India, like of late, I would say. Yeah, Thank you for the thank you very detailed much, and answer. good wishes Uh, for your further journey. Thank you so much, guys. I okay. appreciate it. So I request everyone to please switch on your camera for a group photo. Really grateful to see so many people joining from different parts of the country for this enriching webinar. And once again, let's give a big cheers to our speakers. Ma'am, if you haven't taken a screenshot, we can do like this for a Yes, screenshot. yes, we can make a butterfly. Yes, great idea. It would be a great one. Yeah, now you can take a screenshot. Smiling faces with butterflies. I saw Lata ma'am hand raised. Ma'am, do you have any question now? Okay. So there are a few, one chat more from Isha. She was asking what is the best season to have butterfly garden. Ma'am, I think I have answered the question. So I'll speak for everyone also. कि बटरफ्लाई गार्डन के लिए ऐसे स्पेसिफिक सीजन नहीं होता है, बट यूजुअली जब हम प्लांटेशन करते हैं, अगर आप कोई भी प्लांटेशन करेंगे तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हम वो मॉनसून से जस्ट पहले करें या आफ्टर फर्स्ट शावर करें, क्योंकि जब हम कहीं पर भी पौधा लगाते हैं हम पानी देते हैं, तो जब हम नॉर्मल पानी देते हैं और जो बारिश का पानी होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को उगने में काफ़ी हेल्प करते हैं. इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि मॉनसून से जस्ट पहले यानी मई एंड या जून 15 जून मतलब जून फर्स्ट वीक तक हम लोग प्लांटेशन चालू कर दें, क्योंकि आफ्टर इन रेन्स एंड आफ्टर रेन्स इट वुड बी अ रियली डिफिकल्ट टास्क टू डू द प्लांटेशन. और गर्मी में तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं सर्वाइवल के, क्योंकि जैसे आप प्लांट करते हो इतनी तेज़ गर्मी रहती है कि लीव्स के मरने के चांसेस रहते हैं. इसलिए try to plant in last week of May and first week of June. Those 15 to 20 days would be the perfect time to plant. There is hand Also, raised from like, Ashwin Kumar sir. Yes, yes. So also like adding to Abhishek's point, if Abhishek ने तो सब perfect बताया, so when you will like अगर बटरफ्लाई गार्डन किया भी हो and if you have been like in confusion कि कितना प्लांट करना है, कितना वाटर करना है हमें, इन रेनी सीजन तो वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लाइक इन विंटर्स 2 बार तो आपको वाटर करना पड़ेगा. लाइक नॉट 2 टाइम्स, चलो एक टाइम तो पकड़ ही लो बीच का, बट समर्स व्हेन देयर इज लाइक स्कॉचिंग हीट और ड्राई हो जाते हैं प्लांट्स, थोड़ा उनको थ्रेट आ सकता है, सो एक बार सुबह बिफोर लाइक द एक्चुअल सन की इंटेंसिटी बढ़ने से पहले और शाम को व्हेन इट द सन का इंटेंसिटी फिर से कम हो जाता है, those are the best times to basically give water, especially in the summer seasons. तो ये बस ध्यान में रखिएगा.
Thank you, Rajat sir. Ashwini sir, you may ask. Sorry, Ashwin. Okay, I think we had a good discussion, and thank you, Anjali ma'am, and thank you, Mishal sir, and thank you, Abhishek sir and Rajat sir. Like, it was really very happy moment for Sustaina Greens that we came up for celebrating this big butterfly month, and I look forward for future collaborations for the events, for nature trails, or something like that, where we can get active participation from different people, whether from academia or from industry professionals. Thank you so much. So we are ending this webinar. Look forward to see you in future. Bye bye. Yes, bye. Thank you, everyone. Thank you. It was a very nice. Hello. Yeah, can you hear me? Yes, ma'am. You're audible. Yeah, we run an NGO, so you can advise me where all I can promote it, because I like the concept very much, though I am very new to this concept. But it's really very interesting and very needful for the biodiversity. We do a lot of Miyawaki forestation. So how we can promote this butterfly garden also in industrial area, I'm much interested. So please guide me on that. I will contact you in person afterwards. Sure. Yeah, thank you. Ma'am, Meenakshi ma'am, you are on mute. Yeah. Lata ma'am, may I know your NGO name Yeah, it's Greenosonic Foundation. and where you are based at? We are based at Mumbai only, Mulund. Okay. Thank you so much. And you're also in Mumbai, I suppose? No, ma'am, we are based in Baroda, but one of our speakers, Rajat Joshi sir, he is based in Mumbai and he works in Pune. Okay, fine. But we can collaborate definitely. Okay, sure. Thank you. Bye bye, everyone. Bye.